In this video, we are going to discuss about Snehana, which is part 2, which deals with the types of Snehana, which are Bahya Snehana and Abhyantara Snehana. There are two types of Snehana according to the approach, which are Bahya Snehana and Abhyantara Snehana. The part 1 has been already discussed, which includes introduction, Sneha Yoni, Sneha Paka and all. You can watch it, which the link is present in the description box. So let's continue. Types of Snehana. There are two types of Snehana, which are Bahya and Abhyantara Snehana. Bahya Snehana are application of Snehana externally for the purpose of Snehana. And Abhyantara Snehana is the application of Sneha internally. Application or administration, whichever you are, Snehana through oral route. That is, administration of Snehana through oral route is known as Abhyantara Snehana, whereas application of Snehana externally for the purpose of Snehana is known as Bahya Snehana. There are various types of Bahya Snehana, which may be Abhyanga, Udvartana, Lepa, Mardana, Unmardana, Padaghata, Parisheka, Samvahana, Gandusha, Murdhatela, Karnatarpana, Karnapurana, Nasa Tarpana, Akshitarpana, Mastishya, Avagaha. These are all the Bahya Snehanas. Okay, we are going to discuss one by one. Now, Mardana and Unmardana. Simply Abhyanga. Mardana is nothing but Abhyanga. Okay, performing pressure massage in the downward direction after the application of oil to the palm is known as Mardana. Whereas opposite to Mardana is Unmardana, in which the pressure massage is done but in the upward direction by application of oil on the palm is known as Unmardana. Mardana and Unmardana are classified, or there will be different types of them according to Vatsyayana Kama Sutra, which are Abhyanga, that is massage with oils, Samvahana, whole body massage, Kesha Mardana, head massage, Utsadana, massage with Kalka, Udvartana, massage with Churna, Udgharshana, reinforced massage with Churna. Okay. Now Abhyanga. Abhyanga is nothing but anointing the oil with oil or ghee. Okay, type of Tailapaka used in Abhyanga, which I have discussed in the previous video, is Madhyama or Kharapaka. Okay, Mridupaka is not used in the Abhyanga eventually. Okay, the types of massage movements. The massage movements types used by Swedish massage parlors were touch, stroke, friction, kneading, vibration, percussion, joint movements. Simply touching, stroking, by frictioning, kneading like a dough, vibration, percussion, and joint movements were done by doing the massage. These were according to Swedish. Okay, importance. What is the importance of Abhyanga in day-to-day life? A person who wants to be healthy should resort to Abhyanga every day. Okay, in Samhitas, Abhyanga has been mentioned as a part of Dinacharya. As we all know, Abhyanga is one of the part of Dinacharya which should be done as in an everyday basis. Okay. For importance, let's see benefits of Abhyanga. Abhyanga Machari Nityam, Sajarashramavataha, Drishti Prasada Pushtavayuhu, Swapna Sutvaka, Dhadakrat. Ashtanga Sutra, second chapter, which is Dinacharya. Okay. Abhyanga Machari Nityam, by doing or by application of oil on the body or by massaging the body daily, the benefits are Jarahara, Shramahara, Vatahara, Drishti Prasad, good for senses, Pushtikara, strength, Ayushya, enhances longevity, Swapnakara, good sleep, Tvakdhadekrut, Klesha Sattvam, Abhighata, Sahatvam. These are the benefits of Abhyanga. There are many benefits of Shirabhyanga. Some of the important ones are: it is good for headache, baldness, that is Khalitya, graying of hair, that is Palitya, hair fall, strength, gives strength to skull, nourishes hairs and indriya, the skin becomes beautiful, face will be glowing, and the person will get good sleep and happiness always. And the benefits of Pada Abhyanga. Pada Abhyanga is a part of Abhyanga as well, in which Abhyanga is done on the feet, legs. Okay, the massage is done on the legs. Pada Abhyanga provides quick relief of stiffness, roughness, dryness, fatigue, numbness of legs. It makes legs strong and stable. It controls vata and very good for gridrasi, that is sciatica. Okay, and it prevents the cracks over the legs and sankocha of sira and snayus in the leg region. Okay, now after this, let's discuss the indication of Abhyanga. Best in both healthy and deceased, as in Atura as well as Swastha, Abhyanga is to be done. For those who are to be administered Svedana, Abhyanga is done for those who are to be administered Svedana. अभी उसका नेक्स्ट प्रोसेस उसको स्वेदना होने वाला है, सुडेशन होने वाला है और शोधना होने वाला है उसका नेक्स्ट, वमन विरेचन कुछ तो होने वाला है उसका, तो उससे पहले अभ्यंग करना चाहिए, उसको इंडिकेटेड है. इट इज इंडिकेटेड इन बाल, वृद्ध, कृश, रोगी एक्सेट्रा, ऑल टाइप्स ऑफ वाता रोगा, विषम ज्वरा एंड त्वक्विकारास, द अभ्यंग इज इंडिकेटेड. After seeing the indications of Abhyanga, let's see the contraindications of Abhyanga, where the Abhyanga is not to be done. In Kapha Rogi or Kapha predominant diseases, the Abhyanga is not done. Person suffering from Ajina, indigestion, Nava Taruna Jara, विषम ज्वरा में करने का इंडिकेटेड है, मगर नवा या तरुण ज्वरा में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. आफ्टर संशोधन से पहले करना इंडिकेटेड है, संशोधन के बाद में करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर करे तो उसका अग्निमान्य होगा.
ठीक है. Immediately after Vamana Abhyanga is contraindicated. After Tarpana Kriya, person suffering from Netra Roga, Karna Roga, Atisara having Samadosha Avastha, Abhyanga is contraindicated. If done in the above conditions, it causes Agni Mandya and worsens the disease condition. It is to be remembered. Now, procedure of the Abhyanga. We will discuss the procedure of Abhyanga in two methods. The classical method, which is told in Samhitas, and the current method. Now, first, classical method. Abhyanga is done by taking a luke medicated oil or ghee by examining Prakriti, Desha, Kala, Rutu, and Dosha of the Rogas. Okay, according to classics, Abhyanga should be performed by applying the whole body, especially applying oil to the whole body, especially on the heads, ears, feet, etc. And then initially, one should commence the procedure with Shiro Abhyanga with the lukewarm oil. Okay, applying lukewarm oil to the body and doing the Mardana, according to Chikitsa Manjari and Chikitsa Sangraha, Abhyanga should be performed in Anuloma Gati. There are two gatis, Anuloma Gati and Pratiloma Gati. Anuloma Gati is towards the hair follicles. Pratiloma Gati is opposite to the hair follicles. So the Abhyanga is done from the Anuloma Gati towards the hair follicles. So they have also mentioned that specific direction of movement depends on the involvement of dosha. ठीक है. तो अगर वाता दृष्टि है तो अनुलोम गति, प्रतिलोम गति इज फॉर कफ दृष्टि. अल्टरनेट अनुलोम प्रतिलोम गति इन पित्त दृष्टि. अनुलोम और प्रतिलोम दोनों भी है तो पित्त दृष्टि. खाली वाता दृष्टि है तो अनुलोम गति, पित्त दृष्टि है तो प्रतिलोम गति. दीज आर द गतिज शुड बी फॉलोड व्हाइल डूइंग द अभ्यंगा or ovulation therapy in the while doing the Abhyanga. Okay. After applying the oil or doing the Abhyanga, the bath is to be carried out after Abhyanga. Okay. If a person undergoing Abhyanga daily, if it is a part of Dinacharya, the Abhyanga is a part of Dinacharya in the persons who are undergoing Abhyanga, then he has to stay for 2 hours period after applying the oil. Okay. And then he must take the bath. If Abhyanga is undergoing once in a week, then he should wait for 4 hours. If undergoes once in a 15 days, he must wait for 6 hours. Okay. If undergoes once in a month, then he should stay for 1 day and next day he must take the bath. Okay. These are the classical method of doing Abhyanga. And then when we come to the current method, we have two procedures to be done. One, the materials, Sambara Sangra, which we say in Panchakarma, and by the massage is done by placing the patient in 7 different positions. Okay. Materials required should be same: oil, vessels, soft towels, the powder or medicated oil, with which the Abhyanga is to be carried out, the massagers. Okay. Total, it is said that 2 to 3 massagers should be present for doing the Abhyanga. Okay. Now, before starting the Abhyanga, we should sit. Patient should be seated on the droni, the table in which the Abhyanga is to be carried out. Okay. The oil with optimum temperature should be applied on the head first, in the anterior front anal, and then the whole scalp. Then the oil massage of ear, palm, feet should be done prior to the main process. Okay. The oil should be applied uniformly to the by the two therapists on the either side of the table. Start massaging scalp, head down to the neck, and upward back, shoulders, upper arm, forearm, chest, abdomen, back, and lower limbs are to be carried out. Subsequently, the Abhyanga should be done in the 7 different postures. Okay, with sitting, supine, left lateral, prone, right lateral, supine, and then sitting. Okay, avoid prone position with the patient with having chronic lung diseases, GIT. Upper back should be massaged upward and downward direction. Okay, and the circular manner massage should be done in limb joints as well as in umbilical region. Okay, these are some of the massages done in the current method. Okay, there are different techniques done by different massagers. Okay, this Padaghata, the massage by foot with deep pressure after Taila Abhyanga. After doing the Taila Abhyanga, the Padaghata is to be carried out. It is mainly practiced in South India, that is mostly in Kerala. Okay, in this the patient is advised to lie on the ground covered with mat. Okay, and then massager should is going to be stand on the side of the patient and hold the rope, which is hanged. By holding the rope, the massager stands on the patient. Okay, and then the massager should dip his foot in the oil. The foot is dipped in the oil and containing vessel and apply the oil with deep pressure in the abdomen, chest, limbs, and then backside up. The massager should have well controlled. हाँ, massager ऐसा रहना चाहिए कि मतलब फिट रहना चाहिए वो प्रोसीजर करने के लिए. Not too thin, not too obese. मोटा भी नहीं रहना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको प्रेशर लगाना है थ्रू फीट. Okay. And then indications. It is done in Hemant Ritu, the person of well-built body, and after exercise in vessels. Normally wrestlers do the Padaghata, not the healthy ones. Okay. Samvahana. Samvahana means Sukhakara Sparsha. Sukhakara Sparsha. Pleasure or comfortable touch. Squeezing with gentle pressure after the application of Taila is Samvahana. Pleasurable touch is Samvahana. Actions of Samvahana are Pritikara, Nidrakara, Vrishya, Prasadana of Mamsa Rakta Tvak. Prasadana of Mamsa Rakta Tvak. Mitigates Kaphavata, relieves tiredness. Samvahana is normally we can correlate with the Thai massages, which the normal people indications are Vata Rakta, Nidranash, and other Vata Vyadis.
स्नेह अवगाह, immersion of complete body except head in warm oil containing at the top of specific period is called avagaha, avagaha snehana. Okay, sneha avagaha increases bala by entering through veins, hair follicles and arteries. Indications in daruna vata, apatanaka, apatantraka, these are eye diseases. Okay, sarvanga vata vyadis and bhagna fractures. The sneha avagaha has been indicated. स्नेह परिषेक, pouring of warm oil, etc. etc. means ऑयल भी ले सकते हैं, पर्टिकुलर वसा ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं, कौन सा भी स्नेह द्रव्य ओवर द बॉडी फ्रॉम स्पेसिफिक हाइट फॉर स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज परिषेक. एक्शंस वातहर, रिलीव्स टायर्डनेस, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, वुंड्स, ट्रॉमा, वृश्य, बल, वर्ण, अग्नि, स्थिरता. इसके प्रोसीजर्स के पिक्चर्स देखने हैं आपको बोले तो आई हैव डन अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द बाह्य स्नेहना. प्लीज वॉच इट. द वीडियो विल बी प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन एज वेल और यू कैन वॉच इन द चैनल. लेपा. Lepa can be that is which is paste in the form of paste, wherein paste of drug is applied topically to the affected part is known as lepa. The synonyms of lepa are lipta, lepa, lepana. Okay, the importance. Lepa pacifies the provoked local dosha by local applications. The lepa has been applied topically. ऊपर से लगाते हैं ठीक है लेपा, तो लोकल दोषों को प्रोवोक जो है उसको स्पेसिफाई करेगा. ठीक है. मोर ओवर इट ऑल्सो हैज एक्शंस लाइक शोधना, उत्सादना, रोपना एंड प्रहलादना. ठीक है. These are all nourishment processes. Types of lepa. According to Acharya Shushruta, there are three types of lepa. They are pralepa, pradeha, alepa. Pralepa means the type of lepa which has शीत गुण, तनु, विशोषी और अविशोषी. मतलब कंप्रेसिंग एक्शन भी है, नॉन कंप्रेसिंग एक्शन भी है. ठीक है. और ये शीत है. Whereas pradeha it is उष्ण और शीत, थिक और थिन, अविशोषी, नो कंप्रेसिंग एक्शन. ठीक है. कंप्रेसिंग एक्शन नहीं करेगा. और आलेपा हैविंग मॉडरेट कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्रलेपा एंड प्रदेहा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स, एक बार देख लीजिए. नाउ मेथड्स ऑफ लेप एप्लीकेशन. ठीक है. द पेस्ट शुड बी जेंटली रब्ड ऑन द स्किन इन अपवर्ड एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेयर्स. ओके. द मोड ऑफ एप्लीकेशन इज मोर क्विक एंड इफेक्टिव. जल्दी जल्दी लगाना, मतलब वो ड्राई होने के लिए टाइम रहेगा ना, तो इट शुड बी डन इन द वेट कंडीशन एज वेल. तो बिकॉज ऑफ दिस द एप्लीकेशन एंटर्स द रोमकूपा, द इनर लेयर ऑफ द hair follicles, and further gets absorbed to the Svedavasrotas and Shiramukha, leading to the desired effects which we are to be gained after the lepana. ठीक है. By applying the lepana, मतलब during applying the lepana, we should consider some of the thickness of the lepa. If we are applying the lepana for doshagna, हमको दोष निकालने के लिए, मतलब दोष स्पेसिफाई करने के लिए लेपा लगाना है, तो इट शुड बी 1/4 ऑफ द थिकनेस. विषग्ना 1/3 एंड वर्ण फॉर ग्लोइंग और बाय improving the texture of skin. For the improving the texture of the skin, the lepa applied, if the lepa is applied, then it should be of half angular thickness. Wet lepa pacifies the disease, whereas dry lepa causes the vitiation of dosha. So इसलिए लेपा कभी भी क्विक लगाना, मतलब उसको लगाने के लिए देरी नहीं करना कि मतलब वो ड्राई हो जाए. ठीक है. वो वेट जब अभी उसका कंसिस्टेंसी जब वेट रहेगा तभी अच्छे से काम करेगा. ये पेसिफाइज द डिसीज. अभी ड्राई होगा तो इट कॉज द विशेषण ऑफ दोषस. ओके. अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, द थिकनेस ऑफ लेपा आर इफ महिषार्द चर्मोत्सेद. Mahisharda Charmotsheda means thickness equal to the or moist skin of buffalo, approx 3 to 5 mm. Okay. तो वो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत हो गया. अकॉर्डिंग टू चरका, त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा, 1/3 of अंगुष्ठ मात्रा is the thickness of the lepa. Okay. Some of the rules which are been described for the application of lepa. Prelepa should not be applied in night. Okay, it is contraindicated. मतलब जब वेट है तभी लगाना चाहिए. मतलब और the lepa material should not be cause any vitiation of rakta as well as त्वचा. Okay. Secondly, the first lepa should be the thickness should be maintained of the lepa. Okay. And once dries, the lepa अगर लगाने के लिए आपको देरी हुआ है, लेपा अगर वो ड्राई हो चुका है तो उसको रीयूज नहीं करना चाहिए, फ्रेश लेपा प्रिपेयर करना चाहिए. ये सब थोड़े रूल्स हैं, तो याद रखिए लेपा लगाने के टाइम. ओके. इंडिकेशंस क्या क्या है? ऑल द स्किन डिसऑर्डर्स एज वेल, मतलब याद रखने के लिए कुछ ये नहीं यहाँ पे कि कुष्ठ है, विसर्प है, मुखदूषिका, शोथ है, खालित्य, पालित्य, शिरशूला, उदरशूला आर सम ऑफ द इंडिकेशंस फॉर लेपा. द नाइट टाइम ऑफ अप्लाइंग लेपा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. नेक्स्ट इज अक्षितर्पणा. अक्षितर्पणा, यू विल रीड दिस इन द क्रियाकल्प एज वेल इन द शालक्य तंत्र. ओके. तर्पणा इटसेल्फ मींस टू नरिश. क्या नरिश करना है हमको? आई को. ठीक है. अक्षितर्पण नरिशमेंट ऑफ आइस. अक्षितर्पण इज वन ऑफ द नेत्र क्रियाकल्प. इट गिव्स नरिशमेंट टू द आइस एंड क्यूर सम ऑफ द आई डिसीजेस कॉज्ड टू वात पित्त. वात पित्त कंडीशन में तर्पणा यूज करते हैं. ठीक है. इन दिस प्रोसेस द आइस आर फिल्ड अपॉन विद मेडिकेटेड गियर ऑयल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ओके. नाउ इंडिकेशंस ऑफ अक्षितर्पणा व्हेन वी सी द डायग्नोस बिफोर द आइस, stiffness, dryness, trauma in the eyes are indications of Akshitarpana. Also includes the Vata Pitta disorders of eyes, hard lids with falling eyelashes, dirty eyes, squinting of eyes, various eye diseases like Krishon Milana, Sirotpata, Siraharsha, Arjuna, Shukra, Timira, Abhishanda, Adhimanta, Anyato Vata and Vata Parya are that is almost all the diseases we use Tarpana, Akshitarpana. ठीक है. Contraindication, Tarpana should not be done on Durdina. Cloudy day अगर रहा, दुर्दिन रहा तो Tarpana should not be done. उष्ण शीता डे, हवा चल रही है तो तभी भी नहीं करना है. एंड इट शुड नॉट बी डन पर्सन सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, टायर्डनेस एंड गिडीनेस. ठीक है. इन सब केसेस में अक्षितर्पण शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड.
व्हेन वी कम टू द प्रोसीजर ऑफ अक्षय तर्पणा, जब हम उसका प्रोसीजर कैसे करते हैं वो देखते हैं, तो उसको संशोधन क्रिया मतलब शरीर का संशोधन करने के बाद ही तर्पणा करने का उद्देश्य है हमारा। मतलब the patient is asked to lie down on his back in a room free from direct sun rays, wind, dust, etc. A cotton soaked with a mild fomentation. The Svedana should be done on the sides of the eyes, as well as by keeping some of the areas surrounding the eyes. And then एक ब्लैक ग्राम द माशा पिष्टी लेते हैं, उसको मतलब माशा पिष्टी बनाते हैं, ओके, पेस्ट लाइक बना के उसको द हाइट मतलब 2 अंगुला हाइट जितना रहता है उतना सराउंडिंग द आइज वी मेक अ एनसर्कल करते हैं आइज को। फिर अभी प्रोसेस चालू होता है कि लिक्विफाइड घृतमंडा और मेडिकेटेड घी सिद्ध स्नेहा या घृतमंडा को स्लोली पोर करते जाते हैं एंटायर आईलैशेस टिल द एंटायर आईलैशेस टू बी कवर्ड। ओके, पेशेंट को इंस्टेंट क्या करते हैं कि उसको ब्लिंक करना है आइज, उनमें से निमेश करते रहना है उसको वाइल डूइंग द प्रोसीजर। ओके, आफ्टर रिटेनिंग द घी फॉर स्पेसिफिकेटेड टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से वो मात्राकाल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो टाइम तक हमको करना है। फिर वो लिक्विड ड्रेन करना है। कहाँ से ड्रेन करेंगे हम? टू आउटर कैंथस से हम ड्रेन करके उसको फिर आई को लूकवार्म वाटर और त्रिफला डिकॉक्शन से वॉश करने के लिए हम बोलेंगे। ये था प्रोसीजर हमारा, ठीक है। अभी जब हम ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो स्वस्थ हेल्दी पर्सन के लिए 50 मात्रा काला, कफ प्रिडोमिनेंट के लिए 60 मात्रा काला, पित्त प्रिडोमिनेंट डिसीज के लिए 800 मात्रा काला, वात प्रिडोमिनेंट के लिए 1000 मात्रा काला। फिर हम आई डिसीज में आए तो संधिगत अगर रोग है, नेत्र रोग है तो 300 मात्रा काला, वर्तमगत 100 मात्रा काला, शुक्लगत नेत्र रोग है तो 500 मात्रा काला, कृष्णगत नेत्र रोग है तो 700 मात्रा काला, दृष्टिगत नेत्र रोग है तो 800 मात्रा काला और सर्वगत है तो 1000 मात्रा काला। सम्यक योगा क्या है तर्पण के फीचर्स ऑफ प्रॉपर तर्पण हुआ है कि नहीं, मतलब कैसे लगेगा, तो सुख स्वप्न आएगा पेशेंट को, सुख स्वप्न, अवबोधत्वम, वैषद्यम, वर्णपावटम, व्याधिध्वंसम, क्रिया लाघवमेव। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रॉपर तर्पण। ओके, अतियोग, अगर अतियोग हुआ है तर्पण का तो द पेशेंट फील्स लाइक गुरु अविला, मतलब गुरु अविला वो फील नहीं करेगा, मतलब आइस विल बी हैवी, अविला मतलब आगे ऐसा डस्टी दिखाई देगा, तो उसको अति स्निग्ध ऐसा लगेगा, अश्रुकंडु होगा मतलब टीयर्स विथ इचिंग ऐसा आएगा, दोष समुत्कृष्टम इंक्रीज, दोष प्रोवोक हो जाएंगे, ठीक है। अब अयोग हुआ है, सफिशिएंट तर्पण नहीं हुआ है तो रूक्ष अविला अस्राड्यसहम रूप दर्शनम, दृष्टि दिखाई देगा उसको, व्याधि वृद्धि होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्णपूर्णा, फिलिंग ऑफ ईयर बाय ल्यूकवार्म स्नेहा फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड फॉर टाइम इज नोन एज कर्णपूर्णा, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रोसीजर इंक्लूड्स पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पाश्चात कर्म। लेट्स डिस्कस द प्रोसीजर। अगर हम पूर्व कर्म में देखिए प्रोसीजर ऑफ कर्णपूर्णा में, तो प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ईयर का प्रॉपर एग्जामिनेशन करके फिर उसको क्लीन करना है, ईयर को देखना है कि कोई डिस्चार्ज है कि नहीं, फिर वो निकालने के बाद प्रॉपर अभ्यंग और स्वेदना देना है ईयर और थोड़े नेक के पार्ट में भी, ठीक है। फिर बाद में हम प्रदान कर्म में आएंगे, जहाँ की द पेशेंट को लैटरल पोर्शन में सुलाएंगे, मतलब अगर हमको राइट ईयर में कर्णपूर्णा करना है तो उसको लेफ्ट लैटरल पोर्शन में सुला के राइट ईयर में हम कर्णपूर्णा प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा करके हम उसको पेशेंट को सुला के फिर द ल्यूकवार्म मेडिकेटेड ऑयल इज फिल्ड ईयर विद द हेल्प ऑफ गोकर्णा एक यंत्र है, उससे तो करेंगे, नहीं तो हम ड्रॉपर से भी कर सकते हैं। आजकल ड्रॉपर से, स्पून से हल्लू हमको कर्णपूर्ण करना है विथ मेडिकेटेड ल्यूकवार्म ऑयल, ठीक है। द पेशेंट इज एडवाइज नॉट टू मूव टिल द procedure is to be done. Then after the pradhana karma for particular duration, we will discuss duration later. पाश्चात कर्म में क्या करना है हमको, तो फिल्ड मेडिकेटेड ऑयल शुड बी टेकन विद द हेल्प ऑफ वेसल बाय स्लोली टर्निंग टू अपोजिट साइड। अभी तो कर्णपूर्ण करा है, मतलब उसका ईयर पूरा फिल्ड है आइस से, मतलब ऑयल से, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करके उसको जो भी बचा हुआ स्नेहा उसके मतलब ऑयल उसके ईयर में है वो टिल्ट करके एक वेसल में भर लेना है, ठीक है। ईयर कैविटी क्लीन करना है प्रॉपर टिश्यू पेपर ऑयल से, फिर ईयर प्लग शुड बी केप्ट इन द ईयर फॉर पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। प्रदान कर्म में हमने ड्यूरेशन के बारे में पढ़ा था, तो ड्यूरेशन फॉर कर्ण रोग के लिए 100 मात्रा, कंठ रोग के लिए 500 मात्रा, शिरो रोग के लिए 1000 मात्रा एंड स्वस्थ के लिए 100 मात्रा काल। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इफ द मेडिकेटेड लिक्विड इज रसादी से बना हुआ है मेडिकेटेड लिक्विड जो हम स्नेहने के लिए यूज कर रहे हैं, तो मॉर्निंग आवर्स में करना चाहिए बिफोर फूड एम्प्टी स्टमक। इफ तेल यूज कर रहे हैं तो प्रोसीजर इवनिंग में करना चाहिए, सायंकाल में, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है कर्णपूर्ण के? डेली यूज ऑफ कर्णपूर्ण प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ वातज कर्णरोगा, मन्याग्रह, हनुग्रह, बाधिर्य, ठीक है। इट सबसाइड्स पेन इन हनु, मन्या, शिरा एंड कर्ण, ओके, पेन भी होने नहीं देगा। तो योगा क्या है, अगर कर्णशूल है तो पेन हो रहा है तो बिल्व तेला, निर्गुंडी तेला, इससे हम कर्णपूर्ण करेंगे। कर्णनाद हो रहा है तो अपमार्ग क्षार तेल से कर्णपूर्ण करेंगे। बाधिर्य है, डेफनेस है तो बला तेल से, धन्वंतरम तेल से हम कर्णपूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट बाह्य स्नेह नाम है मस्तिष्क, कीपिंग स्नेह और स्नेह मिक्स्ड कलका ऑन द हेड इज नोन एज मस्तिष्क। द कीड़े पंचकर्म में इसको तलम भी बोलते हैं, तलम, ठीक है।
application of medicated paste made of appropriate herbs on the scalp for a specific period of time is known as thalam. Thalapotecyl, the application of wet medicated paste over the head and then covering the same with the processed plantain leaf. Plantain leaf मतलब पद्मा का जो पत्ता रहता है उसका. तो it is found to be very effective in various psychosomatic disorders. When we come to the procedure of thalapotecyl, we should make a paste with some of the mentioned drugs. Drugs मतलब पर्टिकुलर डिसीज के लिए जब हम थलापोटेचिल करते हैं उसको हम मिक्स करेंगे, पेस्ट करेंगे, फिर उसको हम किसमें देन इट इज़ मिक्सड विथ बटर मिल्क. ओके, तकरा. देन बाय द पूर्व कर्मा वी विल प्रिपेयर द पेशेंट. he is made to sit comfortably in a armchair and hair can be completely removed. Massage head with warm oil and then mild fermentation with towel dipped in hot water is done. When we come to the actual procedure, that is pradhana karma. Tie the long strap of cloth around the head above the level of ears and eyebrows. Then the paste prepared thickly about 0.5 to 1 centimeter thick it should be on the scalp, initially on the front and then back left side, leaving the small central portion. Pour some oil on the tala into the central portion. Place the padam patra over the paste so that that is fully covered head except the center region. The leaf is kept in the portion by tying along the long strap of cloth around the head. The duration of procedure should be 30 to 60 minutes. After the specified time, remove the paste completely. Wipe off the head and apply Rasna Churna as the Paschat Karma. Okay. Now the patient is, after this procedure, patient is said as the application is done in cold atmosphere. Itself the application is a cold in nature, so he should avoid using fan or staying in the AC for long time. Okay. Indications are mainly psychiatric disorders and insomnia. Okay. Now Murda Tela or Murdini Tela. The process in which sneha is applied on the head and it is a procedure of anointing the head with the oil. Murdini Tela are of 4 types, which are Abhyanga Seka Pichavo Bastishtya Chaturvidham, Murdini Tela, Murda Tela Bahugunam, Tatvidya Uttaruttaram. मतलब 4 प्रकार के मूर्धनि तेल है. शिरोभ्यंग, सेक, शिरोपीचु, शिरोबस्ती. इसमें से उत्तर उत्तरा मतलब अभ्यंग शिरोभ्यंग से भी सेक अच्छा है, बेस्ट. शिरो सेक से भी पीचू बेस्ट है, शिरो पीचू से भी बस्ती बेस्ट है. मतलब जैसे हम उत्तर उत्तरा जाएंगे, जैसे हम नीचे जाएंगे, इससे भी अगले वाला बेस्ट रहता है. वो श्लोका में बताया गया कि मूर्धनि तेल क्या है. फर्स्ट शिरोभ्यंग, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल ऑन द हेड फॉलोड बाय मसाज इज पॉपुलर नोन एज शिरोभ्यंग, परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ शरीराभ्यंग. प्रोसीजर, जब भी हम प्रोसीजर देखेंगे शिरोभ्यंग का, तो प्रोसीजर तो 3 भाग में डिवाइड है कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म. जब भी हम पूर्व कर्म देखेंगे तो ऑयल को स्नेहपाक करना है हमको. स्नेहपाक मतलब वी विल डू इट एज अ स्नेहपाक एज खरपाक और मध्यमपाक. नो मृद पाक फॉर द अभ्यंग एज वी हैव स्टडीड अर्लियर. ठीक है. और फॉर शिरोभ्यंग द ल्यूकवार्म ऑयल इज सेलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर दोषास. ठीक है. नाउ इन प्रधान कर्म द पेशेंट इज मेड टू बी सीटेड ऑन द धोनी और टेबल इन कंफर्टेबल पोजीशन. The warm oil of the optimum temperature or room temperature should be applied on the head first in the interfrontal, then the whole scalp. The Karna Abhyanga is also be done. The oil heated should be applied uniformly in all over the body. Start massaging scalp, head, move down to neck, upper body and shoulders, etc. Now the Abhyanga, Shirobhyanga has to be followed or includes 9 steps, followed by vertex, occipital and temporal region. Now we will discuss the 9 steps followed in the Shirobhyanga. First one is smearing of the oil. The oil of approximately room temperature is poured over head and smeared over the head by dividing the hairs with the help of fingers. Fingers को ऐसे से divide करके हम smear करेंगे all over the shira. Then the second step is gharshana hasta, means then the massage while massaging the whole head, moving the palmar surface of the hand before backwards. Okay, that is gharshana hasta. Complete area of scalp is measured by for a desired period for 3 to 5 minutes acceptably. Palmar region से करते हैं gharshana hasta. Now the third step of Shirobhyanga is mridvangali tadana, means fingers of both the hands is moved as if picking up the tough hairs. Okay, then dvihasta tadana, gentle strokes are placed on the palmar surface of the cup with the palmar surface on the scalp of the heads by both the hands, dvinguli, simultaneously and alternatively. ठीक है. फिर taranga hasta, fifth step is a taranga hasta, means gentle strokes are placed on the client head by rapid rocking movements by both the palms and hands simultaneously. Then anguli kridana hasta is done by rocking movements, not gentle strokes. Gentle strokes are done taranga hasta. Now rocking movements on the head with the palmar aspect of the little finger का palmar aspect से and thumb से हम करेंगे. Then मृदु मुष्टि ताड़ना. In this maneuver or the massager gently strokes on the areas of the head with the closed fist से gently stroke करेगा. इसलिए मृदु मुष्टि ताड़ना to the ulnar border for simultaneously done alternatively. Okay. फिर शब्द अंगुली क्रीडना
Both the hands are clasped together. With the little finger, the strokes are done like this. Okay. By other fingers producing the brubbing sounds. Then Gatita Hasta. The flat of the palm is placed on the client's head and is molded in the shape of the scalp, followed by the gentle, firm and pressure on the head. At the end, end of the procedure, the medicine on the face should be wiped out with the tissues and towel. This is Paschat Karma. Okay, when we deal with the Paschat Karma, the patient should take a complete rest for 15 minutes of the Shirobhanga, okay, in the comfortable position. And patient should take a bath with the lukewarm water with suitable soap or Snana Churna. And after doing the Snana, we should apply a Rasna Churna, little Rasna Churna on the talam or the head of the patient. Okay, the duration it is approximately 25 to 35 minutes. Mostly हर एक जो हम स्टेप हम डिस्कस करें 5 to 6 minutes से ज़्यादा नहीं, 5 to 7 minutes is most appropriate one. 5 minutes is the most appropriate one. Paschat Karma, rest, bath and Rasana Churna as we have discussed. Okay. Second in the Murdhini Tela is Shirodhara. Shirodhara is also known as Shiroseka. Continuous pouring of medicated liquid in a systematic manner on the forehead or scalp using Dhara Yantra is known as Shirodhara. Synonyms Dhara, Sheka, Parisheka, Avasheka, Seka, Chechana. Based on liquid used, the types of Dhara, Tela Dhara, Takra Dhara, Kashaya Dhara, Kshira Dhara, Kshirapaka Dhara, Jaladhara. Of Shirodhara or Shiroseka is indicated in stress, psychosomatic disorders such as IBS, neurological disorders, psychiatric disorders, convulsive disorders, strokes, etc. And also in the psoriasis, eczema, hypertension, alcoholism, vata vyadhi, facial palsy, neuropathy, and loss of memory as well. Contraindicated in Kaphaja Vikaras. As you all observed that all the Snehana procedures are almost contraindicated in Kaphaja Vikaras. Okay, Shirodhara further increases Kapha, which makes the disease difficult to cure. So it is contraindicated in Kaphaja Vikaras. When we discuss the procedure of Shirodhara or Shiroseka, it includes the Purva Karma, which includes preparation of patient. Patient is prepared. Patient is advised to pass the stools and urine. The patient pulse, temperature, BP all are recorded. And posture of patient for Shirodhara is supine position. So Dharapatra, which is the Dharapatra is the one in which the oil of medicated ghee is to be poured in the lateral, that is known as Dharapatra, is fixed 4 angula above the forehead, and the eyes and ear should be covered with cotton to prevent the entry of liquid into the eyes and ears. So, and then we will be doing the selection of the sneha for particular conditions. For example, in Vata doshas we use Tilatela, Pittaja Grita, Kaphaja also Tilatela. In Rakta dosha we can use the Grita. Okay, the Dharakalpa is to be prepared here, and we will fix the position of Dharapatra, that is 4 angula above the patient, and Dharavarti is to be hanged to the opening of the Dharapatra so that it can be poured in the uniform layer through the Dhara. Okay, Pradhana Karma. Okay, in the Pradhana Karma, the room where Shirodhara is performed should be clean, well ventilated. Okay, Shirodhara is done in the morning on empty stomach after the proper massage of proper abhyanga, and the selected liquid should be kept in Dharapatra, poured continuously, neither fast, neither too slow. Okay, that should be maintained here mainly. Okay, the flow of medicated may be adjusted either with the help of stopper. There will be a small cork in the Shirodhara Patra. Okay, and it should be adjusted so that the maintenance of the flow of the liquid should be done. Okay, and when the liquid starts pouring, then the vessel is moved to the pendulum manner, starting from the one lateral side and to the other lateral side. The liquid collected in the another vessel is used to refill and the Dharapatra before it comes to empty. Okay, because we the duration of the Pradhana Karma is at most half to 45 minutes. Okay, 1 आवर तक भी जा सकता है, इसलिए हमको मतलब एक धारा पात्र में कभी यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है, मतलब वो खत्म ही होने आएगा ना, तो इसलिए हम दूसरे में भी कनेक्ट करके हल्लू मतलब जो अभी खत्म होने आया तो फिर फिल होते जाएंगे, फिर इन द मॉर्निंग अप टू 21 डेज तक करना है वही तेल से. ठीक है, टेम्परेचर इज सुकोष्ण, ल्यूकवार्म टेम्परेचर यूज. ओके, अभी पाश्चात कर्म. After Pradhana Karma, the Paschat Karma is after Dhara process is completed. The head of patient is wiped out, dried. This is for a short duration and rest करने के लिए बोलेंगे और मसाज करेंगे with oil, and then lukewarm bath should be done. Applying of Rasana Churna on the vertex of the head. The patient is advised to take the light diet for the rest of the day. ठीक है, फिर धारा दोष है. Some of the doshas present in धारा, they are धारा done from most height or very fast, very slow. मतलब वही बोल रहा हूँ ना, जो हम the conditions should be followed so that it should not affect or the patient's diagnosis. Okay, it may produce मूर्छा, शूला, छर्दी, रक्तपित्त and ज्वर. चिकित्सा गंडूशन नस्य शुंठी कषाय पाना लघु डाइट आर द चिकित्सा फॉर द धारा दोष. सम ऑफ द योगास एज वी हैव डिस्कस. वातज है तो बला तेल, दशमूल क्वाथ घृत, पित्तज रोग चंदन उशिर क्वाथ, कफज रोग नागर मुस्तक, मधु यष्टि क्वाथ इज टू बी यूज्ड एज yogas for Shirodhara. Now the another type of Shirodhara itself is known as Takradhara. Takradhara, in which the variety of Shirodhara in which the medicated takra poured continuously stream over the forehead. Okay, that is known as Takradhara. Here same the material required will be Dharapatra Yantra. Okay, and the cotton pad. Here the main are the Amlaki Churna, milk, musta, oil, Rasna Churna, etc. are the materials required. Here in the preparation of medicine comes with the condition that the Amlaki should be the 1 year old. The Amlaki taken in the procedure should be 1 year old, which is dried through the sunlight and kept in the mist during the night, should be taken in the quality of 1 prasta. 1 prasta Amlaki
should be taken. And the kashaya is prepared by mixing it with 18 कुड़वा वाटर के साथ मिक्स करके उसको 1/6 होने तक कषाय बनाना है उसका. फिर इक्वल क्वांटिटी ऑफ सोर बटर मिल्क तक लेके उसको ऐड करके प्रिपेयर करना है कषाय को फॉर ट्रीटमेंट. ठीक है, वो प्रिपेयर करके सेम द प्रोसीजर एज वी डिस्कस इन शिरोधारा इज टू बी कैरिड आउट फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन. ठीक है. एंड द इंडिकेशंस ऑफ व्हेन वी कम टू इंडिकेशन ऑफ तक्रधारा, द धारा प्रिपेयर्ड विद आमलकी एंड तक्र इज यूजफुल इन अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, दैट इज पालित्य, डलनेस, थिनिंग ऑफ हेयर्स, एग्रीवेशन ऑफ त्रिदोषा, हेडेक, ojuksha, numbness of palm and sole, UTIs, joint disorders, heart diseases, tastelessness, reduced digestive power, in diabetes mellitus, hypertension, psoriasis, IBS, etc. The takradhara has been said. Same puraka pradhana paschat karma is to be carried out as that of we have said in shirodharas. Okay, duration is same as 45 to 1 hour. Okay, if shivering is observed in the patient as the takra is cold in nature and we are pouring in the head itself, so shivering is observed, the procedure is to stop immediately and he should be done as a relieving nature, as a ushna मतलब उष्णोपचार is to be carried out. Okay. The third Murdini Tela is Shiropichu, procedure in which a piece of cloth or a gauze piece is folded and dipped in specific oil which is to be carried out for Snehana, is kept on anterior fontanelle which is Brahmarandha. When we come to the procedure of the Shiropichu, the patient is made to sit comfortably in an armed chair. Armed chair में सुकून से बिठाना है पेशेंट को. Then the tie a band of cloth around the forehead above the ears. Okay, place a piece of cloth having the length and breadth of 16 cm or 15 cm each over the vertex. Okay, then keep a cloth of pieces of same size over the other to each to reach the height of the above 2 cm. Okay, मतलब एक से ऊपर एक रखना है. फिर pour a lukewarm oil at the center till the cloth is soaked. Generally, Pichu is maintained for 30 to 90 minutes. Then remove the Pichu and wipe the head completely and apply the Rasnadi there. This is the main procedure. Actually, हम क्लोथ रख के भी ऊपर से ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो मतलब डिप करके भी उसके ऊपर एक डाल के हम उसको सो करने के लिए रख सकते हैं. That is known as Shiropichu. Okay, indication is hair fall, itching, cracking of skin, burning sensation, netastambha, distress of head, paralysis, facial palsy, cerebral dysfunction, distress of eyes, and insomnia, etc. The indications of the Shiropichu. Now, the fourth type of Murdini Tela, and the most important one, is Shirobasti. The word Basti here itself indicates to retain or to hold. Thus, the Shirobasti of the oil is made to retain on the scalp for the prescribed time. Okay, in this, the procedure, the Pura Karma includes Atra, Siddhanta, preparation of patient, Sambara, Sangra materials required. Now, when we do all this, okay, the main procedure comes to the Pradhana Karma, which includes Basti Yantra Dharana, Taila Dharana, observation of Samyak Yoga Lakshana, removal of Taila, and Basti Yantra. These are the 4 steps included in the Pradhana Karma. But when we go into detail of this procedure, when we see that the patient is made to sit erect on the chair, one strip cloth is made with the Mashakalka pasted around the head, above the ear. Okay, हम कपड़ा बांधते थे, यहाँ पे माशाकल्का बांधना है हमको. The leather sheet of about 12 अंगुलास. 12 अंगुला बड़ा सा लेदर शीट लेके उसके आजू बाजू सर्कुलर मोशन में हमको फिक्स करना है. With and again Mashakalka is been with help of Mashakalka we should make a certain barrier so that it is fixed it at the bottom of the inner surface and tied around the head, so that the lower part of leather sheet is attached to strip of the cloth. Okay, the two ends of the leather sheet are attached together by using Mashakalka. Mashakalka से बांधना है वो leather strip को, cloth को जो हम tie करें. ठीक है. And another strip of cloth pasted with Mashakalka is wrapped to the leather sheet. Now the Basti Yantra is ready. और by मतलब हम फिक्स करेंगे और उसके एंड्स को भी बांध देंगे किससे, माशाकल्का से. फिर और एक स्ट्रिप हमको बांधना है बाय मेकिंग अ क्लोथ प्रिपेयर्ड विद माशाकल्का. ओके, pasted with mashakalka, and we will wrap it around the head so that leakage does not happen of the oil. Now the Basti Yantra is ready. Okay, then the suitable medicated oil warmed by keeping hot poured in the surface of the leather cap slowly, carefully, alone. Also, one can pour oil on the coconut leaf. Helps to prevent sudden falling of warm oil on the head. Okay, मतलब डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, कोकोनट लीफ लेके भी हम ऐसे पोर कर सकते हैं. ठीक है. तो द क्वांटिटी ऑफ ऑयल शुड बी 2 अंगुला अबव द स्कैल्प, दैट इज 1.5 अंगुला अबव द स्कैल्प. Care must be taken by keeping the temperature of oil constant. The process should be continued until the period of appearance of सम्यक लक्षण, जो हम सम्यक लक्षण बोल रहे थे वो अपीयर होने तक हमको कंटिन्यू करना है. सच एज वक्त्र स्रावा, वाटरिंग ऑफ द माउथ. अगर उसको पेशेंट बोल रहा है मेरे को वाटरिंग, माउथ में वाटरिंग हो रहा है, वो मॉइस्चनेस फील हो रहा है नोज में, कर्ण स्राव हो रहा है मतलब कर्ण से डिस्चार्ज निकल रहा है, तो वी शुड स्टॉप द प्रोसीजर. द ड्यूरेशन इज फॉर वाता अकॉर्डिंग टू दोषा सर 10,000 मात्रा काला, फॉर पित्ता 8,000 मात्रा काला, फॉर 6,000 मात्रा काला, स्वस्थ 1,000 मात्रा काला. आफ्टर डूइंग दैट, आफ्टर द पाश्चात कर्म, आफ्टर रिमूविंग द ऑयल एंड बस्ती यंत्र, द मृदु अभ्यंग इज डन ओवर द हेड एंड स्कंद प्रदेश, दैट इज शोल्डर प्रदेश. सायंकाला इवनिंग इज द बेस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट. when the शिरोबस्ती is meant, सायंकाला इवनिंग इज द बेस्ट टाइम फॉर शिरोबस्ती. Maximum duration of Shirobasti is considered as 7 days. Okay.
Vagabond told that Shirobashi should be conducted for 3, 5, and 7 days. Okay. Indications are numbness of head, Ardita facial paralysis, Jagare, insomnia, Shiroroga, Nasa Shofa, dryness of moon, and Timira are some of the indications of Shirobasi. Now we will deal with the second type of snehana, which is Abhyantara snehana. Based on the action, Abhyantara snehapana is of 3 types: Shodhananga snehapana, Shamananga snehapana, Brahmananga snehapana. Shodhananga snehapana is one of the essential purva karma of Samshodhana. Hence, almost all the Shodhana arha conditions, Shodhananga snehapana is advised. Okay. Now, Shamananga snehapana, that is administration of snehapana to pacify the morbid doshas. We are only here to specify the morbid doshas, whereas Shodhananga we will take out the morbid doshas. That which do not expel out of dosha, not aggravate the normal dosha, and mitigates the aggravated dosha is known as Shamana. Okay. Hemadri states that Shamana snehana normalizes the aggravated dosha without expelling out disturbing the normal dosha. जो aggravate हुए हैं उनको normalize करेगा और जो normal है दोषा उनको टच भी नहीं करेगा, मतलब डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, वो है शमनांग स्नेहना according to Hemadri. Third type of Abhyantara snehana is Brahmananga snehana, that is the administration of sneha along with Mamsarata, Madhya, Kshira, etc. are known as Brahmananga snehana. The dose of sneha should be alpa or even less than the Rasyasi Matra. The Brahmana sneha is indicated in Bala, Vruddha, Pipasartha, Snehadveshi, Madhyashila, Stri Sneha Nitya, Mandagni, Krisha, Bhiru, Mrudukoshti, Alpadosha, and Ushnakala. Okay, these are indications of Brahmananga snehana. Relation between the Brahmana snehapana and food. If Brahmana snehana is taken before food, Prag Bhakta gives strength to Uru, Jangha, and Katipradesh. Vata Anulomana does Vata Anumolamana, cures diseases of lower limbs. If the Brahmana snehapana taken in Madhya Bhakta with or middle of the meal, then enhances Agni Bala, gives Bala and Sthirata in the Sharira, reduces Kukshi Shulaha. Uttara Bhakta or after food, if Brahmana snehana is taken, it enhances stability of Indriyas and cures the diseases of head and neck. Okay. The one terminology comes which is the Siddha Sneha or medicated oil. What is medicated oil? These are the snehana prepared with drugs of any origin. किसी भी drugs के साथ जो भी स्नेहा prepare होता है उसको सिद्ध स्नेहा बोलते हैं, मतलब prepared medicated oil. Okay, in Samhitas there are thousands of sneha which are used extensively in various diseases with potent therapeutic efficiency. They are all known as Siddha Sneha. Or indications of snehana. The persons or the patients who are fit for snehana are Svedyaha, Shodetvyashtaha, Rukshah, Vatavikarinah, Vyayama Madhya Strinityaha, Snehayaha, Suryeshcha Chintakah. मतलब as a Purva Karma the snehana has been done, we all know that. And for the persons who are fit for Svedana, fit for संशोधना, जो व्यायाम नित्य में डेली व्यायाम करते हैं उनके लिए, स्त्री आ सकते हैं, वो इंडिकेटेड है स्नेहा के लिए. जो मध्य आ सकते हैं, मध्य डेली मतलब पीते हैं, चिंतक थिंक्स मोर, दे आर ऑल इंडिकेटेड इन स्नेहा. इन डिफरेंट डिजीजेस, वातव्याधि, तिमिरा, रूक्ष, कृश, अबल व्यक्ति, स्नेहा इज इंडिकेटेड. नाउ व्हेन वी कम टू द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्नेहा और दोज हु आर अनफिट फॉर स्नेहा आर आमज थरह, इनडाइजेस्टेड फूड इन स्टमक. अभी ऑलरेडी इनडाइजेस्टेड फूड है स्टमक के लिए, अभी हम उनके लिए उनको स्नेहा नहीं करा सकते. ठीक है. फिर अभी यश्चान आनन गुधा, सिक्रेशन फ्रॉम माउथ एंड आनस, such as Ajirna, indigestion, Annadveshi, disliking food, Atisara, diarrhea, Cherdi, vomiting, Datta Basti Nasyaha, Virekaha, given Basti Nasya and Virechana, the snehana is contraindicated. Durbala, Grardita, chronic poisoning, Garbhini, Madatura, Murcha, Trishna Vekti, Nitya Mandagni, weak digestive, Pratantaha, deceased, Rukshana Arha, fit for Rukshana, Talu Shosha, dryness of pilot, Utsanna Kapha, increased Kapha, Utsanna Meda, increased Meda, Tarunajara. These are all contraindicated for Vishamal, whereas नवाजरा तो इंडिकेटेड है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ स्नेहना. इन दिस वीडियो वी हैव डन ऑलमोस्ट 80%. नाउ इन द पार्ट 3 ऑफ स्नेहना वी विल डू द रिमेनिंग पोर्शंस. प्लीज सपोर्ट. You can join our Telegram channel as well. The link is in the description box. Thank you.